start with chapter number 5, Microsoft Excel 2016. In this chapter, I will tell you about the spreadsheet in MS Excel, what are its features, its components, its moving around, entering data, data types, how to do calculation in Excel and working with worksheet. Now spreadsheet in MS Excel. So Microsoft Excel, what it is a spreadsheet program. Microsoft Excel क्या है? ये एक spreadsheet program है that is used to record or analyze. What you can do, you can record and analyze any numerical data. It is the collection of columns and row that form a table. ठीक है, collection है rows और column का जो एक table form करते हैं. Alphabetic letters are usually assigned to columns and numbers are usually assigned to row. The point where columns and rows meet is called cell. जहाँ पे columns और rows meet करते हैं वो क्या होते हैं? Cells होते हैं. Right? So the address of the cell is given by the letters representing the column and the number representing a row. So now the features of Microsoft Excel 2016. So what are its features? It provides formatting features that enhance the data. ये formatting features होता है जो data appearance को enhance करता है. Right? It provide various features used for doing simple as well as complex mathematical calculation. ये quick search और अगर आपको data को इसलिए replace करना है तो आप replace कर सकते हैं. It allows entering data in series with the help of replacement features if even the changing is based in single cell. अगर आप एक single cell में भी changes करना चाहते हो, so the data is recalculated. जो data होता है वो दोबारा से calculate होता है and it allows data to represent it in a graphical form और वो आपको graph form में दिखाई दे. Right? These are some features. Now it's a micro Excel interface. ठीक है, ये आपकी spreadsheet है. I will tell you here. This is your quick access toolbar. This is your file menu, right? What is this? This is complete the ribbon we say, and this is your what it is? It is your formula bar button, right? ये क्या है आपका insert worksheet button. This is worksheet navigation tab. This is normal view. This is page layout view, and this is page break view. और ये क्या है आपका? ये vertical scroll और horizontal scroll इसे आप कहते हैं, right? Now understanding worksheet. Let's study about what are rows, what are columns, what are sheets, and what are workbook. So worksheet क्या होता है? Collection of rows and columns, where a row and column meet. जहाँ पे भी आपके row और column meet करेंगे, they form a cell. जहाँ पे भी आपके रो और कॉलम मीट करेंगे वो क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे. A cell are used to record data and each cell is uniquely identified. आप हर एक सेल को uniquely identify कर सकते हैं by their cell address and they are usually labeled with letters. While जो rows होती हैं ये क्या होते हैं? Usually numbers होते हैं. Now a workbook is a collection of worksheet. By default workbook has 3 worksheets. You can delete and you can add more. 3 तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी. उसके बाद अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो. Right? Now let's study about the components. First is active cell. What is active cell? The cell you are currently working. जिस पे आप अभी इस टाइम वर्क कर रहे हो वो आपका active cell होता है. A dark border outline cell. आपने देखा होगा एक डार्क कलर का बॉर्डर दिखाई देता है तो वो क्या है आपका एक्टिव सेल. Then we have column heading. It is the list of columns in the worksheet. Column are listed alphabetically. आपको A to Z आपको alphabetically देखने को मिलेगा. Then we have formula bar जो कहाँ located होती है? Below the toolbar जो display करती है contents of the active cell. ये क्या करती है? जितने भी contents होते हैं active cell के उनको display करती है. As you type और added data, what will happen? Changes जो होंगे वो आपको formula bar में दिखाई देंगे. Then we have name box. It will display location of the currently active cell. ठीक है, जो भी location होगी currently active cell की वो आपको show करेगा. Then we have pointers वो indicate करता है current location. कहाँ पे आपका mouse pointer है? Mouse pointer जो होता है वो change करता है shape को, जो क्या करता है? Reflect करता है type of task you can perform. ठीक है, किस type का task आप perform करना चाहते हैं. Now we have row heading. So for the row heading, the rows in the worksheet and rows are numbered consecutively from 1 up to 65,536. So for that, sheet tabs each worksheet in a workbook
हर एक वर्कशीट जो होती है वर्कबुक में, उसमें शीट टैब होता है जो क्या आइडेंटिफाई करता है, शीट के नेम। टू मूव बिटवीन वर्कशीट यू विल क्लिक द एप्रोप्रिएट शीट टैब। आप किस पे क्लिक करोगे? एप्रोप्रिएट शीट टैब पे। वी हैव टास्क पेन जो अपीयर करता है व्हेन यू इनिशियली स्टार्ट एक्सेल, और ये क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड टास्क। जो टास्क पेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे आप क्या करते हो? वर्कबुक को ओपन करते हो, राइट? Then we have tab scrolling button. Tab scrolling button they are used to move between worksheet in the workbook. ठीक है, क्या करते हो? वर्कशीट में मूव करते हो। देन वी हैव टूल बार जो क्या प्रोवाइड करता है? क्विक एक्सेस टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेल मैन्यू कमांड। जो स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं उसमें आपको बटन्स देखने को मिलेंगे लाइक सेव एंड ओपन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट। देखो कुछ सॉइल पॉइंटर होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में एंटर करने के लिए डाटा को। लाइक दिस इज द कमांड मूव वन कॉलम राइट। इसका मतलब क्या है? आपको एक कॉलम आगे जाना है, राइट? नेक्स्ट है दिस इज मूव वन कॉलम। देखो लेफ्ट की तरफ है तो आपको लेफ्ट जाना है। इंसर्ट डाउन एरो मतलब मूव वन एरो अप। ठीक है, आपको ऊपर जाना है। देन इंसर्ट अप एरो, वन रो डाउन जाना है। पेज अप मतलब आपको जो फर्स्ट रो है स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल की उस पे मूव करना है। और when you have to page down you have to go to next sheet, अगली शीट पे जाना। कंट्रोल प्लस होम it will move the your cell pointer to the top most row। आप कहाँ पे चले जाओगे? जो बिल्कुल टॉप मोस्ट रो है। और कंट्रोल प्लस एंड आप लास्ट रो पे चले जाएंगे, राइट? नाउ I will tell you how you will enter data in the worksheet. Now here are the different steps. First of all you will open the new worksheet and sheet 1 आपको वहाँ पे active worksheet दिखाई देगी। Click on the, वो डिफॉल्ट होता है, click on the cell D1 and type time table. Then you will click on merge and center one जो आपके alignment group on the home tab पे देखने को मिलेंगे। Now click on the cell A2 and you will type Monday. Now you have to press right arrow key and type Tuesday in B2 and similarly the enter data into rest of। ऐसे ही आप क्या करोगे? rest of the cell में डाटा को एंटर करोगे। Now click on cell A3 and type subject marks। आप A3 पे जाओगे और जो भी आपके सब्जेक्ट्स मार्क है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। देखो मैं यहाँ पे शीट दिखा देती हूँ आपको। पहले हमने क्या करा? शीट ए में लिखा, ठीक है। A2 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। Then I have told you A3 subjects marks you will write, and then in A4 you will write the subject. Like we have write Hindi, English, Maths, Science, Computer, and so. Then in A5, what you will write? You will write the marks of the students. Like this, the data will be represented. Next is data types. We have different data. We have number data, we have text data and formula. For number data, इसमें आपके न्यूमरल होते हैं 0 to 9 और करेक्टरिस्टिक्स प्लस माइनस हैशटैग ये सब आप यूज कर सकते हो। देन टेक्स्ट में यहाँ पे आपको अल्फाबेट, नंबर, स्पेसेस और कुछ स्पेशल डाटा भी होंगे बट दे आर नॉट यूज फॉर कैलकुलेशन, लेकिन इनका कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता। देन वी हैव फॉर्मूला, इसमें आपके नंबर वैल्यूज होंगे, आपके ऑपरेशन होंगे और सेल एड्रेस होंगे। ठीक है, हमेशा भी देखेंगे आप कैलकुलेशन जब वर्कशीट में करेंगे तो वो किससे स्टार्ट होता है? इक्वल्स टू साइन से। Now you have to do the calculation in Excel. For that, Excel provides very important features for performing calculation on data. You can perform addition, subtraction, multiplication, division with the help of functions or formulas. The result of calculation आपको cell में दिखाई देता है, यहाँ पे भी आप फॉर्मूले को एंटर करोगे। Then, if the fourth row says C5 to G5, worksheet contains numbers that have to be added, मतलब वो आपको ऐड करना है। सो जो फॉर्मूला बार है जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको उसका क्या दिखाई दे जाएगा? सम दिखाई दे जाएगा। नाउ व्हाट हैपन, जो एक्सेल होता है वो आपको एक बिल्ड इन फंक्शन भी देता है लाइक सम, एवरेज एंड योर काउंट। देन वी हैव वर्किंग विद वर्कशीट, हाउ वी विल वर्क फॉर दैट, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट। अब आपको नई वर्कशीट क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट सेलेक्ट द शीट बिफोर व्हिच अ न्यू शीट हैज टू बी रिप्लेस्ड। राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड चूज इंसर्ट ऑप्शन। एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपको वहां देखने को मिलेगा। Select worksheet option and then you will click on OK. So for that, switching between worksheet. अब आपको switch on करना है तो आप arrow buttons और worksheet tab का यूज करके switch on कर सकते हैं। So first is renaming worksheet. अब हमें क्या करना है? हमने worksheet बना लिया, उसको आपको rename करना। तो आप डबल क्लिक करोगे, right after double clicking on the sheet tab आप उसको rename करोगे और नया नेम ऐड करोगे and you will press enter.
Now deleting worksheet. Now you want to delete the worksheet. For that you will position the cursor. जो भी आपको worksheet delete करनी है आप उसको क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक एंड चूज डिलीट ऑप्शन, और आप राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप उस शीट को डिलीट कर सकते हैं. देन सेविंग द वर्कबुक. अब आपने कोई वर्कबुक बनाई है तो इसको सेव करना है, तो क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड चूज सेव ऑप्शन. जैसे ही आप सेव एज पे जाओगे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा लाइक दिस. यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो सेव और एक सेव एज. ठीक है, यहाँ पे आपको तो आप सेव पे जाएं या फिर सेव एज पे जाएं. सो एंटर द फाइल नेम, और जैसे ही आप यहाँ पे फाइल नेम, जैसे यहाँ पे टाइम टेबल डाल दिया, फाइल नेम डालोगे एंड देन यू हैव टू सेव. तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, राइट. Then your file will be saved over there. This was all about the Excel. Now I will do the exercise for you. So first is multiple choice question. Now tick the correct option. The workbook contain multiple worksheet, workbooks and none of these. So multiple worksheet. A keyboard shortcut which is used to create a new worksheet, that is shift plus. नई भी worksheet बनाने के लिए हम कौन सी क्या की का यूज करते हैं, 4 या F5 या F11, so we will use F5. Then we have, there are alphabet across the top border of each worksheet, row heading, column heading या range. ठीक है, alphabets होती है across the border, तो वो आपकी range होती है. This cell has a thick black border around it. Thick black border किसमें होता है, आपका active cells में. This bar gives information of the current selection, status bar, formula bar या task bar. करंट सिलेक्शन को कौन बताता है, स्टेटस बार. देयर आर नंबर्स ऑफ मार्क फ्रॉम 1 to 1 0 4 8 4 5 7 अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर. इसे कॉलम हेडिंग कहते हैं या फिर रो हेडिंग या लेफ्ट साइड नंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं, रो हेडिंग. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स. सो डैश इज द फर्स्ट विंडो व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. तो क्या होती है, वर्कशीट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द फर्स्ट विंडो व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, दैट इज योर स्प्रेडशीट. Now we have a workbook that contains pages known as, जो workbook के अंदर pages होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, worksheets. Next is dash bar is located at the right side of the name box, that is your formula bar. Dash is a group of contiguous cells that form a shape similar to the rectangle, that is your range. Next is dash is an insertion of row and column, that is your cell. ठीक है, जहाँ पे इंसर्शन होता है रो और कॉलम का वर्कशीट में, उसको हम सेल कहते हैं. That command moves the cell pointer to the last used cell, that is control plus end. उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस एंड. नाउ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट्स ओनली 2 types of data, text and formulas. False. 3 number also. Next is formula bar gives the information of the current selection. It's true. Then we have this key used to move the column to the one right. आगे, it's true. Next is range is an insertion of row and column in the worksheet. Sorry, control plus X secures the current workbook. It's true. Next is range is the insertion of rows and column. It's true. Next is number data type contains alphabets, numbers, spaces or special character. False. We don't have alphabets in them. Now answer the following question. What is MS Excel used for? आपको बताना है कि MS Excel को हम क्यों यूज करते हैं and what are its features. I have told you the features. You will tell that. Now differentiate. आपको वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस करना है. What is cell and what is active cell? जहाँ पे इंसर्शन होता है वो सेल होता है, रोज और कॉलम का, और जिसपे आप वर्क कर रहे हो वो एक्टिव सेल होता है. हाउ कैन यू रीनेम द वर्कशीट? मैंने आपको रीनेमिंग बताई थी, आप वहां पे जाके रीनेम कर सकते हो. What are the different data types which can be entered in the Excel worksheet and write the steps to save a workbook. आप फाइल पे जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज का, आप उस पर क्लिक करोगे, आप अपनी वर्कबुक का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप उसको रखोगे, लास्ट में आप सेव करोगे, तो आपकी जो एक्सेल की जो शीट है वो सेव हो जाएगी. राइट, दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर.
Hope you understood each and everything. Now let's meet in next class. Thank you.